लेकिन ये भूल गए इस कोर्ट में ये तरकीब न चल पाएगी, हर हथकंडे अपनाएंगे। अब चूंकि लेबर कोर्ट से हार गए, शर्मा रहे हैं ये, अभी क्या करें, फेस सेविंग के लिए हाई कोर्ट चले आए। जितने दिन लटका सके लटकाओ, तो जब तक एम्प्लॉय जो है प्राण ना त्याग दे, तभी कर्मों का फल भोगते हैं ना ये लोग। कारपोरेशन वाले कभी पनपते देखा तुमने? हमेशा डांटी खाते रहते हैं, कभी हाई कोर्ट की डांट, कभी मंत्रियों की डांट, कभी मेयर की डांट, और जनता तो कोसती रहती है उनको, क्योंकि सारा पैसा टैक्स के रूप में लेने के बाद भी ये काम नहीं करते ये, ना सफाई रखें, ना कचरा उठाएं, ना व्यवस्था ठीक से रखें। तो दे आर कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक, दे हैव बिकम अ बर्डन ऑन पब्लिक। खुददारी थी भाई उसमें, पढ़ा लिखा इंसान कितना खींच पाओगे भाई। हम लोग भी डर जाएंगे इतना मोटा फाइल देख कर, कह रहे भाई बड़ा भाई बड़ा बड़ा सीरियस केस होगा, इसको बाद में देखा जाएगा। लेबर कोर्ट से अवार्ड ऑफ रीस्टेटमेंट है, और रीस्टेटमेंट इन्होंने 17B के कंप्लायंस में लिखा है, उसको आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू कर। भाई मैनेजमेंट है ना, तो हर हथकंडे अपनाएंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट हुए ना। अब चूंकि लेबर कोर्ट से हार गए, तो अब ये अब शर्मा रहे हैं ये, अभी क्या करें, फेस सेविंग के लिए हाई कोर्ट चले आए। जितने दिन लटका सके लटकाओ, जब तक एम्प्लॉय जो है प्राण ना त्याग दे। इन्होंने खुद एप्लीकेशन लगाई है, उसी में इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए हैं कि थ्रू कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सब तो तभी कर्मों का फल भोगते हैं ना ये लोग। कारपोरेशन वाले कभी पनपते देखा तुमने? हमेशा डांटी खाते रहते हैं, कभी हाई कोर्ट की डांट, कभी मंत्रियों की डांट, कभी मेयर की डांट, और जनता तो कोसती रहती है उनको, क्योंकि सारा पैसा टैक्स के रूप में लेने के बाद भी ये काम नहीं करते ये, ना सफाई रखें, ना कचरा उठाएं, ना व्यवस्था ठीक से रखें। तो दे आर कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक, दे हैव बिकम अ बर्डन ऑन पब्लिक। तब भी वो कर रहा था। खुददारी थी भाई उसमें, पढ़ा लिखा इंसान। अब कोई तुमसे कहे हल जोतो, कर पाओगे? नहीं कर सकते। कोई हमसे कहे कि कुर्सी में बैठ करके बाबू वाला काम करो, नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो माइंड सेट है और ना उसकी ट्रेनिंग है। और वो लड़का एमटेक है, उसे तो नाली साफ करवा रहे हो। इसी प्रकार से इस केस में भी जो है, अब जो लोग गरीब लोग काम करना चाहते हैं, लेबर कोर्ट से जीत गए हैं, अब आप उनका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं बाय फाइलिंग दिस WP। अब आपको पता है फेट क्या है आपकी पिटीशन का। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाई कोर्ट अपना व्यू सब्स्टिट्यूट कर देगा फॉर दैट ऑफ लेबर कोर्ट। आप खुद सोचो कितना खींच पाओगे भाई। हम लोग भी डर जाएंगे इतना मोटा फाइल देख कर, कह रहे भाई बड़ा भाई बड़ा सीरियस केस होगा, इसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये एग्जीक्यूशन लगाए थे, तो एग्जीक्यूशन के ऑर्डर है डिफरेंट पीरियड्स, वो सब करेंगे ये। WP में चले। हाँ, अरे लो, इतना सीरियस मैटर है ये। लेकिन ये भूल गए इस कोर्ट में ये तरकीब न चल पाएगी। तो बहस करो, है क्या इसमें? फिर क्या गलत है बताओ?
कुछ गलत तो बताओ, कहीं कहीं गलती हुई हो उनसे। छोटा सा अवार्ड है, पैरा 18 में आ जाओ। कुछ है ही नहीं इसमें। लिखिए WP बैक वेजेस 25% कर देते हैं, क्योंकि आप भी नहीं प्रूव कर पाए हैं कितने दिन काम किए हो। रीड पैरा 2 है, पैरा पैरा 16 and 17। WP नंबर 3093 और 15। अरे चारों को तो तुम जाने दो, पर इसको दिखाने दो। पिटिशनर नगर निगम ग्वालियर is before this court under Article 227, taking exception to the award passed by the Labour Court number 1 Gwalior on 23rd of February 2015. Full stop. Following reference was made to the Labour Court by the state government upon failure of conciliation proceedings for adjudication, for answer through process of adjudication. ठीक, ये कोट कर दीजिएगा। Full stop. The tribunal, both parties filed pleadings and led evidence. Semicolon, oral and documentary. Full stop. The Labour Court, however, the Labour Court in para 16 has observed that the petitioner corporation, Nagar Nigam, chose not to file complete service record of the petitioner. That is from the year 2006 to October 2009. To ascertain the total length of service rendered by the respondent workman in the petitioner establishment. However, petitioner has produced evidence to in support of his claim of having served more than
240 days in a calendar year since 2002. As concluded by the Labour Court in para 18 of the award. Stop. As the removal of service of the petitioner, respondent, was found to be otherwise than by way of retrenchment, but without inquiry, the same was held to be नहीं otherwise than by way of retrenchment किया ना, without payment of retrenchment compensation, comma, the same was found to be an illegal termination without notice and inquiry. ठीक है, ये लिखा है ना. Consequently, नहीं, उसका जो टर्मिनेशन किया है आपने, छठवीं कैटेगरी में नहीं आएगा वो. इसीलिए नहीं दिया, इसीलिए उसमें होल्ड किया कि अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रिट्रेंचमेंट, और इंक्वायरी किए नहीं हो तब वही तो लिखा रहे हैं. हाँ, क्या लिखा? Then by way of retrenchment without payment of compensation, illegal. हाँ, he has been reinstated, ordered to be taken back in service. Hence, his removal from service was found to be illegal, and accordingly, the reference has been answered with direction to pay 60% reinstatement for reinstatement with 60% back wages. ठीक है, full stop. Shri Sharma, learned counsel for the petitioner, while taking exception to the impugned award, inter alia submitted that even if the service record of the respondent was not produced before the Labour Court, and the Labour Court could not have recorded a finding that petitioner worked for 240 days in a calendar year since 2002 to 2009 for want of evidence in that behalf, as well evident from para 15 of the award. Therefore, the reference should not have been answered in the affirmative with direction for reinstatement with, and that too with 60% back wages. Stop. Per contra, Shri so and so, क्या नाम लिखते हैं? आलोक शर्मा. Alok Sharma, that counsel respondent, submits that as a matter of fact, non-submission of complete service record of the respondent before the Labour Court amounted to an unfair labour practice, of which
a strong exception was taken by the Labour Court as well evident from para 16 of the award. So, such conduct of the petitioner corporation has rightly been deprecated by the tribunal court, by the Labour Court, and justifiably adverse inference has been drawn against the petitioner corporation. So that apart, in para 14 of the award, the Labour Court has considered the details of documents, the complete documents, and the documents submitted by the petitioner together with unblemished, together with good work, good work and unblemished service record. डॉक्यूमेंट्स पर उसी संबंधित हैं. It is also that apart, it is also submitted that in dispute between management and labor, it is an uneven fight between mighty and the poor. Full stop. Respondent workmen, the humble respondent workmen, reposing faith and trust upon respondent, petitioner, continued to work since 2002 and paid wages. First off, due to illiteracy or ignorance of law, he never insisted upon, he could not insist upon complete documentations to be supplied to him, complete documents supplied to him as proof of continuous length of proof of complete length of service. Which of nevertheless, whatever documents were produced before the Labour Court, whatever documents available with him were produced before the Labour Court, as well evident from para 14 of the award. Which of under such circumstances, the Labour Court as an adjudicating authority is required to strike a balance between the parties while answering the reference. Full stop. Strict proof of fact. वो तो पता है नहीं strict rule of evidence is not applicable in labor adjudication. Full stop. Despite court order dated 19/7/13, the petitioner did not produce the entire service record. Therefore, in terms of section
114 जी क्या है वो? हाँ 114 जी है ना? एडवर्स इंफरेंस। हाँ, therefore no illegality can be attached to the order of the tribunal drawing adverse inference against क्या पानी गिर रहा है क्या? Against क्या लिखा? Against the petitioner as provided for under section 114G, small g of the Evidence Act. ठीक है? Under such circumstances, neither there is next paragraph, neither there is illegality nor jurisdictional error. हाँ Burden of proof employer के साथ. Ratio is decided that it is firstly the employee who has to see that during period उसको माधक कर देते हैं ना. that really gave up. नहीं एक बात नहीं होगा वो. 9 से 15 तक की है. हाँ बहुत है. चलो क्या लिखा? उससे पहले क्या था 4-5 महीने 5 से 7 महीने वो भी था सर. नहीं Offset ठीक. भी था. क्या लिखा? In the impugned award, हाँ, stop. Upon hearing counsel for the नया paragraph, ये तो बढ़ते ही जा रहा है पेज. Upon hearing counsel for the parties, this court finds substantial force in the submission of Shri Alok Verma Sharma, advocate. Stop. The very fact that the respondent, the petitioner corporation chose not to disclose, not to file service record of the petitioner, in fact, points towards questionable conduct of the petitioner. Stop. Adverse inference drawn by the tribunal under 114 small g of the Evidence Act, comma, in the obtaining facts circumstances cannot be taken exception to. Huh? To. So, the claim for improper termination of service has rightly been addressed while answering reference in favor of the petitioner based upon the evidence available on record, oral and documentary. ठीक? So, nevertheless, the amount of 60% back wages with the order of reinstatement appears to be not warranted, as the documentary evidence led by the petitioner, respondent were not found to be of creditworthy. Therefore, as observed in paragraph 15 of the award, be that as it may, in equitable jurisdiction, and in the fitness of things, this court is of the view that ends of justice shall be subserved in maintaining the award with the modification of back wages, entitling the petitioner, respondent back wages of 30% with the aforesaid W stand disposed of. इसी के
लाइट में ये सब खत्म कर दो। एक था जो बैक वेजेस से 30% लाइट में ये है 14595, ये 60% जिस कैलकुलेट की थी तो ये आउट ऑफ द टैक्स डॉक्यूमेंट मैटर रिमाइंडमेंट रीकैलकुलेट होंगे। क्या क्या होगा? बैक वेजेस कैलकुलेट करेंगे 60% किसने किया है? लेबर कोड। नहीं तो हम तो लिख तो रहे इन द लाइट ऑफ दिस सब ट्रेड डिस्पोज ऑफ हो गए। So those order will be modified. And the labor shall now pass a modified order बाकी in तो in एक in में है, बाकी तो सब आफ्टर अवार्ड है, आफ्टर अवार्ड। in the light of this, all other cases are disposed of. The entitlement is बहुत है। May we observe that from the date of the award, he will be entitled for. हाँ, 30% back wages नहीं, back wages from the date of the award till payment, till 1 month from the date of the order. Failure of payment of 30% back wages, shall entail interest as ordered, shall entail interest at the rate of 9% per month. और reinstatement नहीं, वो तो इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा उस पर कि आप तुरंत दो एक महीने में पैसा, और reinstatement फोर्थविथ है, फोर्थविथ। नौकरी में ले लिया है? अभी 17 में लिया है, नौकरी में है और वो भी थ्रू कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे। पार्शल पेमेंट जो पुराना पेमेंट कर दिया था, जो 9 से लेकर 15 तक का फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन टिल द डेट ऑफ अवार्ड जो कैलकुलेट हुआ था उसका पार्शल पेमेंट भी कर दिया था। वो तो अच्छा किया। तो इसीलिए उस मैंने दैट इंटरेस्ट में भी क्लैरिफाइड दैट इज नॉट विद इन 1 मंथ देन एक्चुअली। हाँ, क्या लिखा आपने? Entail interest at the rate of 9% from the date of the order. एक महीने में नहीं किया तो ठीक है।